Welcome everyone. The onset of the coronavirus globally has forced people into their homes to avoid any interaction with people and maintain social distancing. And this has led to the concept of study from home. Teachers in Himachal Pradesh across the state are also moving to virtual classes to ensure learning never stops. Here, I will teach Income Tax Law and Practice BC 2.2, which is a subject in the BCom second year, and the paper number is 2 in the different colleges across the state. So let us move first towards the syllabi. The title of the paper is Income Tax Law and Practice, and this subject, this course is of 100 marks, but 100 marks are divided into two parts. One is that is end year examination for 50, and the rest of the 50, 30 is for the internal assessment, and 20, that is the practical or live projects. So 50 plus 30 plus 20. 30 marks are only in the hands of the students. The first component, that is a house test, class test, that carries 10, weightage of 10 marks. Other is 5 marks for attendance, 10 marks for assignments to be prepared by the students and evaluated by the concerned teacher, and another marks is that is for house examination. First of all, the objective of this course is to provide basic knowledge and equip the students with the application of principles and provisions of the Income Tax Act 1961 and the relevant rules. As I have discussed that the paper to be asked in the end year examination is from the 4 units, and the first unit is related to the introduction, in which we will discuss about the basic concepts regarding income, agriculture income, person, SSC, assessment year. These are the different terms that is also available on your screen. The second, then the exempted incomes under section 10. There are so many incomes which are exempted under section 10 of the Income Tax Act 1961. The second unit is because the total income of a person is divided into the 5 heads of the income, and these 5 heads are divided into 2 units. So the second unit is computation of the income under different heads. One in which only the 2 heads of the income from salary and income from house property are covered. The second, the other rest of the 3 heads, that is profit and gains of business or profession, capital gains and income from other sources, are covered in the third unit. Once you are having a knowledge of the 5 heads of the income, then you can compute the total income as well as the tax liability of a person. So person here doesn't mean that is only the natural person. There is a comprehensive definition of the person that we will discuss later. But here in your syllabi, there is only the computation of the total income and tax liability of an individual and firm. The rest of the person, that may be a company,
Hindu undivided family, association of the person, body of an individual, artificial jurisdiction persons, they are not covered here. And once you are having a knowledge of all the heads of the incomes, tax rates, and how the tax liability is calculated, then easily you can prepare the return of the income. And that return of the income, regarding that, you can do a live projects, or you can also file the returns manually or online. In case of the manually, you have to download the forms. These are to be filled up, and after that they are to be uploaded as an XML file. And another option is also that is an online filing of the returns. So there are two options. You can opt one out of these two to upload the returns of. So this paper is important from examination point of view as well as from livelihood point of view, because once you are having a knowledge regarding the income tax, then you can prepare the income tax returns. So after the syllabus, now the first question which is to be arised regarding the background, that is the taxation system in India. What type of the taxation system is prevailing in India? And before the discussion of that, first of all, question is arised, what is tax? If I would say tax is a compulsory financial charge imposed on the pay. So this is a compulsion, this is a compulsory financial charge which has to be paid, and that is to be called here as the tax. Because the taxes are the larger sources of the income for the government, and this money is deployed for various purposes and projects for the development of the nation. And at present we are fighting with the COVID-19, and we also need the finances, and these finances which are to be raised by the government from the different taxes is being spent for the welfare of the society. On the other hand, there may be certain funds in which the donations are to be received, that is voluntarily, but the taxes are the compulsory charge which is to be imposed on the taxpayers. So let us move towards the taxation system in India. Now, in case the taxation system in India, why does government levy tax upon you? This is the first question. And why should there be a tax? If I would say that in India, why the government has to levy tax upon you? First of all, the simple answer for it, because India is a welfare state, and when it is there is a notion of the welfare state, and there is an inequality in a society. कोई गरीब है, कोई अमीर है. And once when there is an economic inequality in society, then how we have to bring them equal. So this is also one of the fact on which we can say that the government has to levy tax upon it. Another one is that you have to use the resources which are to be owned by the nation. Now you can say the land is there, water is there, air is there. So naturally we are also using the natural resources, and these natural resources are generally to be owned by that particular nation. And when we are using these resources, then we have also to pay a certain amount as a compensation for that. So that's why the government has to levy the taxes upon us, and that's why there should be a tax. And I have already discussed that tax is a compulsory financial charge imposed on the taxpayer. Now, if we will move towards the constitutional rights, then from the constitution, there is a constitutional right under the Article 265 that the government can also levy the tax and can collect the taxes. This is another option, that why has to government levy the taxes upon you. Now, if the rights we are getting from the constitution under Article 265, then what are the different rules which are determining the tax principles? So these tax principles
generally to be called here as the canons of the taxation. So canon of taxation means that is the principles of the taxation. And the principle of the taxation, the first canon is that is a canon of equity. What does this canon of equity means? Canon of equity means the tax according to his ability. If the person is rich, has to pay the higher tax. If the person is poor, then has to pay the lesser taxes. So which is generally to be called here as a progressive tax system. So in India, there is a progressive taxation system. Another canon is that is a canon of certainty. Canon of certainty means that time and manner of the payment should be certain and clear both to the taxpayer as well as to the tax officials. So generally, whenever you have to file your returns, whenever you have to deposit the return taxes in the government treasury, I think the time and manner of the payment is fixed, and that's only due to the canon of the certainty. Another canon is that is a canon of convenience. Now, canon of convenience means that the time and mode of payment to the taxpayer, it should be according to the convenience of the taxpayer. That's why sometimes whenever the person is earning the income, at the time he has to deduct the tax at source. That's why it is to be called as a TDS and the TCS. Suppose monthly you are earning 50,000 rupees. So government always say that, okay, at the time of the release of the salary to the person, please go for the deduction of the tax at source. So that is according to the convenience. Otherwise, at the end of the year, whenever he has to pay the tax, and that would be a huge amount, and a huge amount at one stretch cannot be paid by the concerned person. So that's why, according to the canon of the convenience, the tax is to be the time as well as the mode of the payment to the tax according to the convenience of the taxpayer. This is according to the canon of convenience. Canon of economy. Canon of economy means that the taxation should be transparent and economical without any distortion. What does it mean? Distortion here means that suppose if the government has to, government is earning a tax of ₹1, but on the other hand, for the collection of that tax, the government is paying ₹10. Is it the canon of economy? No. So therefore, it should be economical. It means that whenever we are collecting the taxes, it should be transparent. And if I have to collect the ₹1 as a tax, then that should be a 5 to 10% as the expenditure which should be incurred for the collection. Means that is for the administration. That is for the collection of the taxes. So these all are according to the canon of the taxation. These are the general principles through which we generally collect the taxes. Now, what are the basis for determining the taxes in India? There are two. How we have to determine the tax? First one is that is the residential status, and another one is that is the income. So residential status, since you are very new to the income tax, so therefore you are not knowing about the residential status of an SSC. So here the residential status are of three types. One is resident, another one is not only resident, and third one is that is a non-resident. In the simple words, if I would say, if the person is that is concerned with the territorial connection. Territorial connection here means that is India. कितने दिन आप इंडिया में रहते हो और कितने दिन आप फॉरेन में रहते हो. अगर आप और वो हम जो रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे वो एक प्रीवियस ईयर में करेंगे, 1 अप्रैल से 31, और ये प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर की बातें हम बाद में करेंगे. तो आप एक मोटे तौर पे ये समझ लीजिएगा, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट इन ए पर्टिकुलर ईयर योर टेरिटोरियल कनेक्शन इज इन इंडिया. मीन्स कि आप इंडिया में ज्यादा रहते हो. अगर 365 दिन है तो 365 दिन में उसके लिए हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है, और उस रूल के अकॉर्डिंगली एक फॉर्मूला लगा कर हम डिटरमाइन करते हैं कि आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस प्रीवियस ईयर में क्या होगा. तो क्या आप रेजिडेंट है, क्या आप नॉट रेजिडेंट है, ये नॉन रेजिडेंट है. अब मैं सिंपल वर्ड्स में अगर मैं हूं कि अगर रेजिडेंट है, अगर उसने इंडिया में इनकम अर्न करी और फॉरेन में इनकम अर्न करी तो दोनों के ऊपर उसको टैक्स देना पड़ेगा. दूसरी बात, अगर नॉट रेजिडेंट है तो इंडियन इनकम और कुछ थोड़ी सी इनकम जो उसने इंडिया से बाहर अर्न करी है, वो थोड़ी सी इनकम कौन सी होगी बाद में डिस्कस करेंगे, उसको प्लस करके हमारे पास जो इनकम होगी वो उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा. लेकिन अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसके द्वारा अगर कोई इंडियन इनकम है
और फॉरेन इनकम है तो उसके ऊपर उसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारे पास रेजिडेंशियल स्टेटस और दूसरा मैंने जैसे कहा इनकम। तो इनकम के आपके सोर्सेज क्या हैं? 5 हेड्स मैंने आपको बताया है। सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है, कैपिटल गेन है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। इन दोनों को मिला करके हम टैक्स को डिटरमाइन करने के लिए these are only the two bases for the determining of the taxes in India. So one is residential status and another one is income. Now there are two types of the taxes. One is direct tax and another one is indirect tax. अब देखिए डायरेक्ट टैक्स इसका नाम ही बोल रहा है, द पर्सन पेइंग टू द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। यानी कि जिसके द्वारा टैक्स दिया जाना है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को वही पर्सन जो वो डिपॉजिट कर रहा है। तभी मैंने आपसे प्रोग्रेसिव वर्ड यूज किया था। सो दिस इज अ प्रोग्रेसिव इन नेचर। हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे। Indirect taxes, the person paying the taxes to the government collects the same from the ultimate consumer. Thus, the incidence of the tax is shifted to the other person. What does it mean? It is a regressive in nature. Suppose you are buying a notebook from the shopkeeper. So, shopkeeper is collecting rupees 10 from you as a cost of the copy, as a cost of the notebook. But you are not knowing that out of the 10 rupees, 1 rupees is also tax and 9 rupees is the cost of that copy. But you pay 10 rupees. Now you are also paying 1 rupees as a tax, which is collected from the end users. But ultimately that is to be deposited by that shopkeeper. So you are not directly depositing that amount with the government. So that's why it is to be called here as an indirect tax. So that's why it is to be called here as a regressive in nature. Now the picture itself is game. अब देखिए ये यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स है वो बर्डन खुद है, खुद ही उसको देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे शिफ्टेड टू अनदर पर्सन in case of indirect tax. So this is the burden to tax. अब क्वेश्चन राइज हो रहा है कि ये डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो मैंने बात करी, तो हमारे जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो एक्साइज है। अब एक्साइज, जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है। जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगता है। जब आप गुड्स को सेल करते हैं तो उसको हम सेल टैक्स बोलते हैं। जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती है। और जब आप विद इन स्टेट सेल करते हैं तो उसके ऊपर वैट लगता है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, मैंने इसलिए ओल्ड फॉर्म आपको बताया क्योंकि आपको गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से पहले आपको नॉलेज होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं, क्योंकि अभी तक भी कुछ एक टैक्सेस ऐसे हैं जिसका अभी भी मर्जर जीएसटी में नहीं हुआ है। अब जैसे एक्साइज है, नहीं हुआ, सर्विस टैक्स है, सेल टैक्स खत्म हो गया, कस्टम ड्यूटी भी नहीं है, लेकिन जो वैट है, अब जैसे पेट्रोलियम है, आपका लिक्वर है, उसके ऊपर अभी भी वैट चल रहा है। तो इस तरह से क्या है कि कुछ एक टैक्सेस को खत्म करके उसके बदले में अब जीएसटी आ गया है। अदरवाइज जीएसटी इज आल्सो वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट टैक्स है जो कि डायरेक्टली पे किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज के द्वारा टैक्स पे किया जाता है डायरेक्टली। इनकम टैक्स जो इनकम के ऊपर, जब हम इनकम अर्न करते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है उसको हम इनकम टैक्स। तो अगर मुझे सैलरी मिल रही है तो मैं सैलरी के ऊपर जो टैक्स दे रहा हूं तो मैं डायरेक्टली उसको दे रहा हूं, इसलिए ये डायरेक्ट टैक्स है। और जो मैं इनकम अर्न कर रहा हूं उसके ऊपर मैं जो टैक्स दे रहा हूं वो दैट इज टू बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स अब ये खत्म हो चुका है, लेकिन वेल्थ सबसे पहले क्या होता था, वेल्थ यानी कि पूरी प्रॉपर्टी जिसके पास है उस प्रॉपर्टी की कैलकुलेशन करने के बाद उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, विच वाज टू बी नोन एज वेल्थ टैक्स। मैट है, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, ये कंपनी फॉर्म में है। एफबीटी जो ये भी कंपनीज के द्वारा लगाया जाता है, जिसको हम फ्रिंज बेनिफिट टैक्स बोलते हैं। छोटे छोटे टैक्सेस हैं जो हम परक्यूजिट फॉर्म में देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं एम्प्लॉइज को, लेकिन ना तो उसके ऊपर कंपनी टैक्स देती थी और ना ही वो एम्प्लॉय टैक्स देता था। इसलिए उस चीज को अवॉइड करने के लिए अब कंपनीज को बोल दिया गया कि अब एम्प्लॉय से आपने एफबीटी लेना है, दैट इज फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो अब हमें नॉलेज हो गया कि डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। अब जितने भी हमारे डायरेक्ट टैक्सेस हैं, और हमारे सब्जेक्ट का टाइटल क्या है, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस।
तो ये इसका मतलब हुआ कि ये डायरेक्ट टैक्स का पार्ट बना। अब हमारा रास्ता जो है वो किस तरफ को चला जाएगा? इनकम टैक्स। ना हम एक्साइज की बात करेंगे, ना सर्विस की टैक्स की बात करेंगे, ना सेल टैक्स की बात करेंगे, ना कस्टम ड्यूटी की बात करेंगे, ना हम वैट की बात करेंगे, और ना ही हम एक तरह से कॉर्पोरेट टैक्स की बात करेंगे, ना वेल्थ टैक्स की बात करेंगे, ना हम मैट की बात करेंगे, ना एफबीटी की बात करेंगे। हम सीधा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस की बात करेंगे। इसलिए हमारा रास्ता यहाँ से इनकम टैक्स तरफ को मूव कर जाएगा। इसलिए इस तभी कई बार क्या होता है कि इस पेपर का टाइटल जो है वो डायरेक्ट टैक्स भी होता है, कई बार इस पेपर का टाइटल इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस होता है, बिकॉज इनकम टैक्स इज द पार्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्स। तो अभी तक जो हमारा टैक्सेशन सिस्टम था इंडिया में, उससे हमें यही कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि जो टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड बिल्ड अप द नेशन। Simple taxation system generate more revenue and support to government expenditure on infrastructure development and public service। आज आपके घर में घर द्वार एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, आप आपके घर में एक बिजली प्रोवाइड की जा रही है, आपके घर में टैप लगाया जा रहा है, आपके रोड्स बन रहे हैं, आपका टेलीफोन कनेक्शन बन रहा है, आपके ब्रिजेस बन रहे हैं, आपके रेलवे बन रही है। ये सारी बातें जितनी भी हैं ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। और इस टाइम हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें पैसे की जरूरत है। वो भी कहाँ से आ रहा है? टैक्सेशन से। क्योंकि आपने देखा होगा मार्च के बाद अप्रैल में हमारी जो जीएसटी की कलेक्शन थी वो बहुत कम थी, अप्रैल में कम थी, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन की वजह से था। अब जैसे जैसे हमारा अनलॉकडाउन हो रहा है, वैसे वैसे हमारी जीएसटी की जैसे जैसे कारोबार बढ़ रहा है, वैसे वैसे जीएसटी की कलेक्शन भी बढ़ रही है, और जैसे जैसे जीएसटी की कलेक्शन बढ़ रही है वैसे वैसे डेवलपमेंट के काम भी स्टार्ट हो गए हैं। नहीं तो एक वायरस के द्वारा पूरे वर्ल्ड को स्टैंड स्टिल कर दिया था। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा इनकम टैक्स से जो सिलेबस में जितने भी हमारी टर्म्स हैं उससे रिलेटेड होगा। तब तक के लिए नमस्कार।